हेलो एंड वेलकम टू सैफ क्लासेस। आज के हमारे ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर इन पाइथन, और इसमें हम सीखेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का फ्लोट डिवीजन कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल विदाउट एनी डिले। So in this tutorial you can see this is what we are going to learn, how to find out 12 double divide minus 5 or integer division. This float division operator is also called truncation division operator as well as integer division operator. Now as you know what is division operator, sabhi ko pata hai division operator kya hai, quite simple. In the lower classes you have studied this. Okay, but Python has added one more operator into this team, that is double division operator or float division operator. So how to find out? This is the working. When you have to find out the float division, you have to divide the left side value by the right side value and round down it to an integer. That means you have to take its floor value of that answer or quotient. For example, if let me take 12 double divide, suppose 5 is there. Okay, normal number, all are positive. So first of all divide 12 by 5 and your quotient will be 5 2s are 10. Your remainder is 2. Its answer will be something else. Maybe you will find out. Take the 0 here. 5 4s are 20. Now so basically when you do 12 single divide 5, your answer is 2.4. But in case of double divide, you don't have to take this value, only take 2 as a positive number. So take 2 is your answer. So don't take fractional part, only take integer part. So if you are doing 12 double divide or float division 5, your answer would be 2. Similarly, if I'll take 13 single divide 5, then definitely my number will be in a completely fractional number, something 5 2s are 12, 5 2s are 10, and then 2 point something it will be. But here in case if I put here double divide, then you have to only take its integer quotient part, not for fractional part. So 5 2s are 10 and remainder is 3. You can still further divide it, but for float division you only have to take integer part. तो आपका आंसर सिर्फ आएगा 2 इस केस में भी. नाउ ये स्टोरी बड़ी सिंपल है. क्या होगा यदि अगर हम इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे? तो अब मैं इसका आंसर फाइंड आउट करने जा रहा हूं. 8.50 डबल डिवाइड 2, व्हाट इज द आंसर ऑफ इट? जब भी आपका ऑपरेंड में एक भी नंबर फ्लोट हो या कोई भी नंबर फ्लोट हो या सारे ही फ्लोट हो, तो आंसर फ्लोट में आएगा. बट it will not give you exactly all the fractional part. No, instead ये सिर्फ आपको 0.0 देगा. That means integer part आपका पूरा आएगा क्वेश्चन, लेकिन आपका जो fractional part है वहां पर fractional part नहीं आएगा, only it will be 0. So जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो it will be 4 point something. The answer of this will be 4 point something. So your correct answer is 4.0. Okay, just try this. 8.40 something. We'll try this here. 8.40 double divide 2. I think it is double divide. I'm not wrong. Yes, it is double divide. Hit enter. Get the answer 4.0. Now similarly 13.13 double divide 5. Answer is 2. If any of the operand is float, अगर इसमें से कोई भी operand float हो जाता है, कोई भी value float हो जाती है, for example 5.0, आंसर आपका आएगा 2.0. It will not give you the exact fractional answer, otherwise it will be equivalent to single division operator. वो काम तो single division का है. अगर मैं इसका पूरा आंसर exact आंसर निकालना चाहता हूँ तो ये आएगा, लेकिन अगर मुझे सिर्फ इसका इंटीजर पार्ट चाहिए तो ये है कि ये सिर्फ इंटीजर पार्ट देगा, लेकिन अगर कोई ऑपरेंड इसमें से फ्लोट होगा तो उसमें ये 0.0 ऐड कर देगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा. Now ये तो हो गए पॉजिटिव नंबर्स की डीलिंग. हाउ द नेगेटिव नंबर्स आर सॉल्व्ड. सो ये क्वेश्चन है which we are going to solve here. Okay, so just take this. How to solve the negative numbers? Okay, so the way to solve negative number is quite simple. You have to do one thing. Take 12 divided by 5
and it is -5, so your answer will be negative. Okay, so when you do this, take it 5 2s are 10. Put decimal point here at 0. 5 4s are 20. Okay, तो आंसर हुआ 2.4 नेगेटिव में 2.4. इसका करना है फ्लोर डिवीजन. गेट इट्स फ्लोर वैल्यू. जब हम कभी भी किसी का फ्लोर निकालते हैं, यानी कि -2.4 का फ्लोर निकालेंगे, सो राउंड डाउन इट टू द इंटीजर. राउंड डाउन इट टू इंटीजर मतलब कि अगला नेगेटिव इंटीजर क्या होगा, ठीक है, या लोएस्ट इंटीजर. इसके बाद क्योंकि 2.4 इज द नेगेटिव नंबर, बट इट और अगर मुझे नेक्स्ट इंटीजर चाहिए जो इससे भी छोटा होगा, तो वो होगा -3. सो योर आंसर विल बी -3. ओके, सिमिलरली यहां देखिए 17 डिवाइड बाई 4. हाउ टू सॉल्व दिस? जब हम 17 डिवाइड बाई 4 को सॉल्व करने जाएंगे, सो आप 17 को 4 से वैसे ही डिवाइड कीजिए जैसे कि आप फ्रैक्शनल डिवीजन में या नॉर्मल डिवीजन ऑपरेटर में सॉल्व करते हैं. सो 4 4s are 16. 1 is the remainder. At decimal point, here add 1 0. 4 2s are 8, and then take 2, add 1 0. 4 5s are 20. So your answer is -4.25. Why? Because this is -17. So your answer is -4.25. and इस पे जब आप फ्लोर ऑपरेशन चलाएंगे, so round down it to the next integer, next lower integer. So इसके बाद इससे छोटा इंटीजर कौन सा होगा? 4.25 के बाद इससे छोटा इंटीजर होगा -5. तो आंसर आएगा -5. We will try this. -17 double divide 4. -17 double divide 4. -5. Same what we have found. ठीक है. 12 double divide -5. 12 double divide -5 जब हम करेंगे, 12 double divide -5. So 5 2s are, that means 2 point something, -2 point something का जब हम फ्लोर निकालेंगे, so it will be -3. Not this, -3. So this is my answer. So I hope it is clear to everybody. इसी तरीके से this is the positive integer, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. 4 3s are 12 and 4 4s are 16, so इसका आंसर आएगा 3. इसका आंसर मैंने जस्ट अभी कैलकुलेट किया, दिस इज -5. इसका आंसर मैंने आपको जस्ट कैलकुलेट करके दिया. इसका आंसर है 5 2s are 10 and 2 point something, so -3. So this is the way how to solve the negative number in Python. यानी कि कोई भी अगर आपको नेगेटिव में वैल्यू देता है, अगर आपको कोई भी नेगेटिव, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला यूं बन सकता है कि अगर इसमें से कोई भी नंबर नेगेटिव है, तो आप एक काम करो, फ्लोर P सिंगल डिवाइड Q, ये है. तो जो भी इसका आंसर आएगा उसका आप फ्लोर निकाल दो, ठीक है ना. अच्छा, मेक श्योर कि Q मस्ट बी पॉजिटिव एंड Q मस्ट बी नॉन जीरो, नॉट पॉजिटिव. नेगेटिव पॉजिटिव एनीथिंग विल बी पॉसिबल, बट ध्यान रखना है कि जो Q है ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो 0 डिवाइड आप करोगे तो ये आपको एक एक्सेप्शन देगा, ये एरर देगा फिलहाल, 0 डिवीजन एरर, और आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा. दिस इज द एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन. ओके, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. दैट मच ओनली इन दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट मॉडुलो ऑपरेटर, और उसमें भी मैं नेगेटिव नंबर्स को डील करना सिखाऊंगा कि कैसे नेगेटिव नंबर्स को सॉल्व करते हैं. पाइथन में उसके लिए एक अलग फॉर्मूला है, व्हिच इज नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक्स इवन इन द क्लास 12th. Okay, I hope this video is helpful to you. Thank you very much for watching.